So welcome back. This is the third NCERT word to word reading clip for the chapter 14 ecosystem. Here before we have seen that there are four important functions in any ecosystem which are important for functioning and to sustain that ecosystem. तो याच्या आधी आपण पाहिलं की कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये मग ती ग्रासलँड असो, ती फॉरेस्ट असो, ती डेझर्ट असो, ती पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, कुठलीही इकोसिस्टम असो, कोई भी इकोसिस्टम को फंक्शनिंग के लिए, सस्टेन होने के लिए चार इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है. पहली हमने देखा प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ एनर्जी इनपुट, और वो सिर्फ कर सकते प्रोड्यूसर्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. द सेकंड वी हैव कंप्लीटेड डिकम्पोजिशन, दैट इज it is recycling of the nutrients from living organisms back to nature. The third is consumption, that is energy flow. And the last is nutrient cycling. Mainly we will see two nutrient cycle, carbon cycle and nitrogen cycle. And phosphorus cycle. So these are the four important operations in any ecosystem. So in this clip we will mainly talk for energy flow in the ecosystem. So briefly I will explain first and then we will go for reading. बघा, कोणत्याही इकोसिस्टमसाठी सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. कोई भी इकोसिस्टम हो, किसी भी इकोसिस्टम के लिए द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. और हम ये भी जानते कि डायरेक्टली द सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली बाय producers, that is plants. No one else can use the solar energy directly. तो आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही इकोसिस्टमसाठी ऊर्जेचा एकमात्र स्रोत सूर्य असतो आणि सूर्यापासून येणारी ऊर्जा म्हणजे सोलर एनर्जी फक्त डायरेक्टली कोण वापरू शकतं? प्रोड्यूसर. कुठलाच हेट्रोट्रॉप, मग तो प्रायमरी कंझ्युमर म्हणजे हर्बिओर असो, सेकंडरी कंझ्युमर म्हणजे प्रायमरी कार्निओर असो, किंवा टर्शियरी कंझ्युमर म्हणजे सेकंडरी कार्निओर असो, किंवा डिकम्पोजर असो, कोणीच ती एनर्जी नाही घेऊ शकत. तो प्रोड्यूसर ने सोलर एनर्जी को ट्रैप करके कार्बन फिक्सेशन किया, मतलब बनाया सबके लिए ऑर्गेनिक फूड. अब इस ऑर्गेनिक फूड के ऊपर बाकी सारे हेट्रोट्रॉप डिपेंड करते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. म्हणजे आता या प्रोड्यूसरनी सोलर एनर्जी फिक्स केली आणि बनवलं ऑर्गॅनिक फूड. आता या फूडवर सगळे डिपेंड आहेत हेट्रोट्रॉप, काही डायरेक्टली काही इनडायरेक्टली. म्हणजे समजा प्रायमरी कंझ्युमर असेल, दॅट इज हर्बिओर, तर तो प्रोड्यूसरवर डायरेक्ट डिपेंड आहे. समजा सेकंडरी कंझ्युमर असेल, दॅट इज प्रायमरी कार्निओर, तर तो प्रायमरी कंझ्युमरवर डिपेंड आहे, तो प्रोड्यूसरवर डिपेंड आहे, म्हणजे हा इनडायरेक्टली डिपेंड आहे. सेम फॉर
the tertiary consumer, that is secondary carnivore. वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड है, जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड है, जो प्लांट पे डिपेंड है. आफ्टर ऑल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इतना ही नहीं, डीकम्पोजर्स, they are also dependent on the same organic food directly or indirectly. So why consumption by primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer is important? Otherwise the energy fixed by plants will not flow. So energy flow साठी आवश्यक असतं consumption. To cut in short, energy flow in the ecosystem from producer to primary consumer to secondary consumer to tertiary consumer or to the decomposer is possible only due to the feeding, that is food chain. Now we have to proceed little. Now check. The solar energy that released from sun, so when reach the earth, you know that only a fraction of it comes to the earth. The photosynthetically active radiation, that is a visible light from 390 to 760 nanometer, is only less than 50% of द इंसिडेंट सोलर एनर्जी. मतलब कि सूरज से जो रोशनी निकली है उसमें फोटोसिंथेसिस के योग्य 50% से भी कम है जी. उसमें भी केवल 2 to 10% ही एनर्जी प्लांट्स यूज करते हैं, और हम जानते कि वो 2 से 10% एनर्जी को सिर्फ यूज करके 170 बिलियन टन्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं एनुअली, जिसमें से 55 बिलियन टन बनता है इन ओशन एंड रिमेनिंग 115 बिलियन टन बनता है ऑन लैंड. वी हैव सीन. नाउ ये जो प्लांट ने बनाया है ऑर्गेनिक फूड यूजिंग सोलर एनर्जी, तो इसका जो आगे फ्लो होगा फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शियरी कंज्यूमर टू टॉप कंज्यूमर या फिर टू द डिकम्पोजर, इसकी वजह से बनती है फूड चेन या फूड वेब. तो हम लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशन समझनी है. So one who can directly use the solar energy is producer, and producer on the terrestrial ecosystem are green plant. So they may be algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and geosperm, या photosynthetic bacteria. The producer in water are phytoplankton, algae. Now consumer. So consumers are heterotrophs. So in consumer, some are macro consumer, you can see them. Some are micro consumers, that is microorganism, decomposers. So who are macro consumer? They are primary consumers, that is herbivores. So herbivores are, say, the cow or goat or deer
or elephant or horse. Then secondary consumer. So they are carnivore. Primary carnivores, they depend on herbivores. Tertiary consumer are also carnivores, but they are secondary carnivore. And top consumer are also carnivore, but they are tertiary carnivores. So the energy flows due to food chains or food webs. There are two types of food chains. One is grazing food chain, GFC, and one is detritus food chain, DFC. So grazing food chain, GFC, detritus food chain, DFC. This is decomposition actually. Remember, the major way of flow of energy in aquatic ecosystem is grazing food chain. म्हणजे ॲक्वाटिक इकोसिस्टममध्ये मेन कंडुईट ऑफ एनर्जी असतो ग्रेझिंग फूड चेन. अँड डेट्रिटस फूड चेन is a major way of energy transfer in terrestrial ecosystem. म्हणजे सर जमिनीवरच्या इकोसिस्टममध्ये जो मेन एनर्जी फ्लो आहे तो डेट्रिटस फूड चेनचा आहे आणि पाण्यामध्ये ग्रेझिंग फूड चेन. मग तिकडे डेट्रिटस का नसते? कारण पाण्यामध्ये तेवढं जास्त मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स किंवा डिकम्पोजर्स नसतात. टेरेस्ट्रियल कंडिशनवर प्रॉपर डिकम्पोजिशन होतं म्हणून. तो आत्ता आपण हे सगळे टायटल्स वाचू शकतो म्हणजे आपल्याला समजण्यास अडचण येणार नाही. तो हम लोग कौन सा टाइटल देख रहे? एनर्जी फ्लो वाला. दिस वन, एनर्जी फ्लो. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. और ये टॉपिक बहुत इजी है, आप इसको समझो और ध्यान में रखो. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अंडरलाइन हम लोग करेंगे वो आप किसी पेज पे लिख लीजिएगा. सो लेट अस स्टार्ट. Except for deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on earth. So underline important point. So sun is the only source of energy for all ecosystem on earth. Exception is डीप सी हायड्रोथर्मल इकोसिस्टम. तो सर डीप सी हायड्रोथर्मल इकोसिस्टममध्ये जर सोलर एनर्जी पोहोचत नाही तो तिकडे मग एनर्जी मिळते कशी? सो दोज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर किमोऑटोट्रॉप. सो दे सिंथसाइज देअर ऑर्गॅनिक फूड युजिंग केमिकल एनर्जी. So remember this, except deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem. Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation power. हा नीट क्वेश्चन होता एकदा, I think 2013. सो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, मतलब धरती तक जितनी सोलर रेडिएशन आती है तो उसमें से
50% से भी कम है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो फोटोसिंथेसिस के काम की है। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। दे फिक्स the solar energy to make a food from simple inorganic material like CO2 and water. Plants capture only 2 to 10% of power, underline. So, out of the photosynthetically active radiation power, only 2 to 10% is captured by the plants. This small amount of energy is enough to sustain entire living world. So it is important to know that how the solar energy captured by plants flow through different organism of a ecosystem. तो इस बात का महत्व है कि ये चीज़ समझो कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है ऑटोट्रॉप छोड़ के, मतलब हेट्रोट्रॉप, उन तक ये एनर्जी पहुंचती कैसे है? तो थ्रू द फूड चेन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर, आइदर डायरेक्टली इफ दे आर हर्बीओर और इनडायरेक्टली इफ दे आर कार्निओर. So you find unidirectional flow of energy from sun to producer, producer to primary consumer, primary consumer to secondary consumer, secondary consumer to tertiary consumer, and so on. So तुम्हाला दिसेल की फ्लो ऑफ एनर्जी कसा आहे, युनिडायरेक्शनल. म्हणजे प्लांटनी जी सोलर एनर्जी फिक्स केली ती सनमध्ये परत जात नाही. प्लांटकडून जी प्रायमरी कन्झ्युमरकडे जाते तर प्रायमरी कन्झ्युमरकडून ती परत प्रोड्युसरकडे येत नाही. इज दिस इन कीपिंग विथ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? येस. फर्दर, ecosystems are not exemption from second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require. तो कोणत्याही इकोसिस्टमला सस्टेन व्हायला सप्लाय ऑफ एनर्जी लागते. त्यांना जे बायोमॉलिक्युल्स पाहिजे ते बनवायला. टू काउंटरॅक्ट युनिव्हर्सल टेंडन्सी टुवर्ड्स इन्क्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस. म्हणजे एक युनिवर्सची टेंडन्सी असते डिसऑर्डरलीनेसकडे, तर ती ऑर्डरलीनेसकडे न्यायची असेल तर एनर्जी इनपुट लागतं. द ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, यू नो इट. सो ग्रीन प्लांट जे असतात इकोसिस्टममध्ये, तो कोई फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ग्रास होगा, श्रब्स होंगे, ट्रीज होंगे, वो सारे प्रोड्यूसर्स है. In terrestrial ecosystem, major producer are herbaceous and woody plant. Likewise, now underline this, producer in aquatic ecosystem are phytoplanktons, algae and higher plant. So तुम्हाला इथं अंडरलाइन करायची आहे. Phytoplanktons, algae and higher plants are the producers in aquatic ecosystem. You have read about food chain and food web. So many food chain interconnected is called food web. So you have read about food chain and food web that exist in nature. Starting from the plant that is producer, the food chain rather food web are formed. So सुरुवात कुठून होते? प्रोड्युसर्सकडनं. So from the producer, food chain or food web starts. So starting from the plant or producer, food chain rather the web are formed such that
an animal feeds on plant or another animal and in turn is a food for another. सो ॲनिमल प्लांट खातात, मग तो ॲनिमल जो आहे तो दुसऱ्या ॲनिमलसाठी फूड असतो अँड सो ऑन. द चेन ऑर वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडन्सी. सो ही जी चेन तयार होते ते एकमेकावर डिपेंड असल्याने. नो एनर्जी दॅट इज ट्रॅप्ड इन टू ऑर्गॅनिझम रिमेन इन इट फॉर एवर. तो जो भी एनर्जी प्लांट ने कैप्चर की वो प्लांट तक सीमित नहीं रहती, वो आगे जाएगी. द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट्स हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज. सो प्लांट ने जो एनर्जी ली है सन से, वो एनर्जी उसने ट्रैप की, वो आगे जाएगी कंज्यूमर के पास, या फिर प्लांट जब मर जाएगा तो फिर स्टार्ट होगी डिकम्पोजिशन वाली चेन. सो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन और वेब. अंडरलाइन, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेट्रिटस फूड चेन और वेब. All animal depend on plant directly or indirectly for their food need because animals are heterotroph. They are hence called consumer. तो सारे एनिमल्स को कहते कंज्यूमर्स. एंड आल्सो हेट्रोट्रॉप्स. सो ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड. Hence, they are called consumer and also called heterotroph. If they feed on producer, if the animal feed on producer म्हणजे जे प्लांट खातात, they are called primary consumer, that is herbivore. And if the animal eat other animal which in turn eat the plant, they are called secondary consumer. Likewise, you would have tertiary consumer also. Obviously, the primary consumer will be herbivore, one who directly consume the plant. Some common herbivore are now underlined. प्राइमरी कंज्यूमर म्हणजे हर्बिओर कौन असतात, ये आपको ध्यान में रखना होगा. तो इंसेक्ट्स आर प्राइमरी कंज्यूमर, बर्ड्स प्राइमरी कंज्यूमर, मैमल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. सो insects primary consumer, birds and mammals also primary consumer in terrestrial ecosystem. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोलुस्क इन एक्वाटिक इकोसिस्टम. तो हर्बिओर किंवा प्रायमरी कंझ्युमर ॲक्वाटिक इकोसिस्टममध्ये कोण असतात? मोलुस्क. रिमेंबर दिस. The consumer that feed on these herbivore are carnivore, or more correctly primary carnivore, though secondary consumer. So ऐसे कंज्यूमर जो हर्बिओर्स को खाते हैं वो कार्निओर हुए या प्राइमरी कार्निओर हुए, पर वो है तो सेकेंडरी कंज्यूमर. Those animals that depend on primary carnivore for their food are labeled as secondary carnivore or tertiary consumer. So remember, secondary carnivore are tertiary consumer.
A simple grazing food chain GFC is depicted below. So grass is a producer, that is PP, primary producer. Goat, primary consumer, that is herbivore. Man, secondary consumer, that is, in this case, man is carnivore. द डेट्रिटस फूड चेन. सो आपण जी पाहिली ती ग्रेझिंग फूड चेन होती. डेट्रिटस फूड चेन DFC begin with dead organic matter called detritus. Underline. Detritus food chain begins with dead organic matter म्हणजे detritus. It is made up of decomposer which are heterotrophic organism. सो आपण डिकम्पोजरला म्हटलं मायक्रो कन्झ्युमर म्हणजे आहे ते हेट्रोट्रॉपिकच. मेनली फंगाय बॅक्टेरिया. तो हु आर डिकम्पोजर, फंगाय, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटस बैक्टीरिया. 3 ध्यान में रखो. दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय degrading the dead organic matter or detritus. These are also known as saprophytes. So remember, though they are consumer, neither they are herbivore nor they are carnivore. They consume dead organic matter, so they are called saprophytes. So autotrophs are plant. Herbivores are primary consumer. Carnivores may be secondary or tertiary consumer. And decomposers are saprotrophs. Decomposers secrete digestive enzyme that break down the detritus into simple inorganic material which is absorbed by them. सो जे डिकम्पोजर्स है वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम डालकर उस डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते और फिर उसको खा जाते. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, grazing food chain is a major conduit of energy flow. एक बार ये नीट क्वेश्चन था, हमारी टेस्ट में भी ये आया था. इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, grazing food chain is major conduit of energy flow. Against this, in terrestrial ecosystem, जमीन के ऊपर larger fraction of energy flows through detritus food chain than through grazing food chain. मला वाटतं यावर्षी ह्याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे मेजर एनर्जी फ्लो होता है थ्रू डेट्रिटस फूड चेन और एक्वाटिक में थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन. डेट्रिटस food chain may be connected with grazing food chain at some level. So detritus food chain म्हणजे decomposers, grazing food chains म्हणजे producer, consumers. तो यांच्यामध्ये कनेक्शन असू शकतं. अब ये इम्पॉर्टंट है. Some organism of detritus food chain are prey टू द ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल. तो फर्ज करो कि ग्रेजिंग फूड चेन में बर्ड है और अर्थवर्म डेट्रिटस फूड चेन वाला है, तो बर्ड्स तो अर्थवर्म खाएंगे. तो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्रिटस फूड चेन आर द प्रे फॉर ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल.
And in a natural ecosystem, some animal like cockroach, crow are omnivore. तो आता हे खूप इम्पॉर्टंट है. कॉकरोच तो इंसेक्ट है, इंसेक्ट तो प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए माने हर्बियोर, पर वो ओमनियोर है. क्रो तो बर्ड है और बर्ड तो हम लोग कहते हैं की इट इज ऑल्सो प्रायमरी कंझ्युमर, पण तो सेकंडरी कंझ्युमर असू शकतो, तो इन्सेक्टही खातो. These natural interconnection of food chain make the food web. How would you classify the human being? So human being may be primary consumer when herbivore, that is a vegetarian, may be secondary consumer or tertiary consumer also. Organisms occupy a place in natural surrounding. Organisms occupy a place in the natural surrounding or in community according to feeding relationship. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म की अपनी जगह इकोसिस्टम में तय करती है उसकी फीडिंग रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, डियर्स माने हिरन किसी इकोसिस्टम में कौन सी प्लेस पे है? सर वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, मतलब दे आर प्राइमरी कंज्यूमर. सो द ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग और इन कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप with other organism. Based on source of their nutrition or food, organism occupy a specific place in food chain that is called its trophic level. So T1 is primary producer, T2 is primary consumer, T3 secondary consumer, T4 tertiary consumer, T5 top consumer. So producers belong to first trophic level, primary consumer or herbivore to second, carnivore or secondary consumer to third, and so on. Now a very important chart is given here. Now look at this chart. Now see, first trophic level, that is T1, are producer, phytoplankton, grass and trees. Second trophic level, that is herbivore, this is T2, they are primary consumer. So who is a primary consumer? Zooplankton, because they eat phytoplankton, grasshopper and cow, because they consume the grass or trees. Now third trophic level is carnivore, T3. So they are secondary consumers. So see, bird, fish, wolf, they are carnivore. So bird, fish and wolf are carnivore. Fourth trophic level, that is T4, top carnivore, they are tertiary consumer. तो देखो, man and lion is example of T4, that is tertiary consumer. So remember these highlights.
The important point to note is that amount of energy decreases at successive tropic level. So when the energy flows from one tropic level to another, it goes on decreasing. Say PP, PC, SC, TC, this is a food chain. So important point to note is that the amount of energy decreases at successive tropic level. So suppose with plant 100, with PC 70, with SC 40, with TC 10, सो ये कम कम होते जाती है. सो प्रायमरी प्रोड्युसर म्हणजे प्लांटकडे जेवढी एनर्जी आहे तेवढी सगळी प्रायमरी कंझ्युमरकडे येत नसते. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट एंड रेस्पिरेटरी लॉसेस एंड डेथ लॉसेस. प्राइमरी कंज्यूमर के पास 70 अगर एनर्जी है वो पूरी सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल नहीं है. सम इज अगेन लॉस्ट एज अ हीट एंड सम इज लॉस्ट एज अ डेड रिमेन्स एंड सो ऑन. और इसलिए इस लेंथ की एक लिमिट रहती है. तो सर ये जो एनर्जी फ्लो होता है तो उसका कुछ रूल है. हाँ, इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ 10% बाय लिंडमन. सो ओनली 10% एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल. इस पे एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्ज करो कि देर इज अ ग्रास, देर इज अ इंसेक्ट, देर इज अ फ्रॉग, देर इज अ स्नेक, देर इज अ पीकॉक. तो सपोज 200 जूल is with grass, so 10% will go to insect, that is 20 joule. Again 10% to frog, that is 2 joule. 10% to snake, 0.2 joule. 10% to peacock, that is 0.02 जूल. तो ये लॉ ऑफ 10% हमने एक्सप्लेन किया. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. व्हेन any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass. Then it serves as an energy source for decomposer. Organism at each trophic level depend on those at a lower trophic level. तो सर ऑर्गेनिज्म एट अ हायर ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल. तो जितना अधिक घास उतने ज़्यादा हिरन, जितने ज़्यादा हिरन उतने ज़्यादा शेर. तो जैसे जितना कम घास उतने कम हिरन उतने कम शेर, लाइक दिस. सो ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट अ प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड. ईच ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टन मास ऑफ लिविंग मटेरियल अवेलेबल at particular time called standing crop. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया standing crop and standing state. So amount of energy available at particular tropic level at particular time is standing crop, and amount of nutrient in soil at particular time is standing state. So each tropic level has a certain mass of living material at particular time called standing crop.
The standing crop is measured as mass of living organism, that is biomass, or number in unit area. The biomass of a species is expressed in terms of fresh weight or dry weight. सो जे बायोमास आहे अवायलेबल म्हणजे स्टँडिंग क्रॉप ते फ्रेश वेट किंवा ड्राय वेटमध्ये आपण घेऊ शकतो. मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट. वाई? तो ड्राई वेट एक्यूरेट क्यों रहता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेरिएबल थिंग. फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो कि दिस इज सर्टन fleshy plant like aloe vera, Corford. So its fresh weight is say 100 gram and dry weight is 10 gram. It means 90% was water. Now this is certain pea plant. Its fresh weight is again 100 gram. But dry weight is 70 gram. So only 30% water. So hence the dry weight will be more accurate. So pea plant is 70 gram in dry weight. The aloe vera plant is 10 gram. सो हे जे फ्रेश वेट असतं हे फसवणारं असतं. सो each tropic level has certain mass of living material at particular time called standing crop. Standing crop is measured as mass of living organism or biomass or number in unit area. The biomass of a species is expressed in terms of fresh weight or dry weight. Measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. Why? We have seen. Number of trophic level in grazing food chain is limited as the transfer of energy followed 10% law. That is, only 10% of energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. So, number of trophic level in grazing food chain is restricted because only 10% energy flows to higher trophic level from previous one. In nature, it is possible to have so many level: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in grazing food chain. Do you think there is any such limitation in detritus food chain? So that's true, there is also limitation in detritus food chain. Now see this picture that shows energy flow. So energy flow through different trophic levels. Now this is T1, first trophic level, producer. This is second trophic level, herbivore. T3, third trophic level, secondary consumer or carnivore. T4, fourth trophic level, so they are tertiary consumer or top carnivore. So the energy from sun which goes to producer.
Some is lost as heat when it transfer from producer to herbivore. Again some portion is lost from the herbivore to carnivore. Again some portion is lost in form of heat from carnivore to top carnivore. Again some portion is lost. Now this follow the law of 10%. So now these are interconnections. That is, this was a food chain, this is a food web. Now ecological pyramids. So in the next lecture we will talk for ecological pyramids.